हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट क्लास। ये आज की ये क्लास उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि अकाउंट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और वो उन सभी बच्चों के लिए जो अभी अभी 10वीं पास करके कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और कॉमर्स की पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स बोथ स्टाफ, ये क्लास उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास में जब भी हम जाते हैं या कोई क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं तो क्लासेस और टीचर जो है कोई भी सब्जेक्ट को बहुत डीप में नहीं समझाते हैं, वो बस ऊपर ऊपर पढ़ा कर चले जाते हैं। तो हमारे इस क्लास का मेन मकसद है कि आपको डीप जानकारी देना है। जब तक आप किसी भी शब्द को, अकाउंट्स के किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से आप समझेंगे नहीं, तब तक वो आपके माइंड में नहीं बैठेगा। और ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है कि कुछ पुअर क्लास के बच्चों, जो गरीब क्लास के, जो बड़ी क्लास अटेंड नहीं कर सकते, वो इस क्लास का फ़ायदा लेंगे। ये क्लास बिगनर्स लोगों के लिए है जो अकाउंट्स में अभी अभी एंट्री लेना चाहते हैं और जो अकाउंट्स को सीखना चाहते हैं। अकाउंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। इसमें आपको जो अकाउंट्स हेड होते हैं उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अकाउंट्स हेड को नहीं जानेंगे, जब तक उसका मीनिंग नहीं समझेंगे, तब तक आप अकाउंट्स की एंट्री को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे और आपके माइंड में हमेशा डाउट बना रहेगा। इसके लिए मैं अपने अकाउंट्स की क्लास शुरू करने के पहले आप सबको अकाउंटिंग हेड की डीप जानकारी देना चाहता हूँ। जब अकाउंटिंग हेड्स की डीपली अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आप अकाउंटिंग एंट्री अच्छी तरह पास भी कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग एंट्री में बुक्स कीपिंग में मैंने 15 इम्पॉर्टेंट हेड बनाए हैं। ये 15 हेड इम्पॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरह समझ लेने के बाद आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं बताया कि ये 15 हेड में पहला हेड है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेड ऑफ अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट में आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं। आपका ईयरली प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाता है। कैपिटल अकाउंट कभी भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, ईयरली प्रॉफिट के ऊपर और ड्राइंग्स के ऊपर। कभी कभी हम ज़्यादा ड्रॉ कर लेते हैं तो कैपिटल नीचे आ जाती है, कभी कभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो कैपिटल ऊपर जाती है। कैपिटल कई तरह की होती है दोस्तों। कैपिटल अकाउंट प्रोप्राइटरशिप के लिए सिंगल कैपिटल अकाउंट होता है। पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, इसमें कई पार्टनर होंगे। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो डायरेक्टर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे, शेयर होल्डर कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे, जिसमें बहुत सारे शेयर्स की कैपिटल अकाउंट होंगी। दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेड है अकाउंट्स का। इस ड्राइंग्स में आपको ये समझ आएगा कि ड्राइंग्स एक्चुअल क्या होते हैं। ड्राइंग्स में आपका विड्रॉल्स होता है। जब भी आप कैपिटल से कुछ भी निकालते हैं तो ड्राइंग्स के ज़रिए ही निकाल सकते हैं। ड्राइंग्स का एक हेड होता है जिसमें पार्टनर्स ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोप्राइटर्स का ड्रॉ करते हैं और शेयर होल्डर के लिए भी ड्राइंग्स होती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ड्राइंग्स किसी भी प्रकार का पर्सनल एक्सपेंस के लिए अगर कोई फंड्स निकालते हैं तो वो ड्राइंग्स के अंदर आते हैं। ये ड्राइंग्स आपके कैपिटल को रिड्यूस करता है।
थर्ड इम्पॉर्टेंट हेड्स है परचेस। परचेस अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हेड्स ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये परचेस अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स के अंदर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। दोस्तों परचेस बहुत टाइप की होती है। परचेस में कैपिटल परचेस भी होता है, गुड्स परचेस होता है, नॉमिनल परचेस होता है और रॉ मटेरियल परचेस होता है। तो परचेस अकाउंट्स की एंट्री को मैं आपको अपने अगले वीडियो में डीप में समझाऊंगा, एंट्री पास करके समझाऊंगा। अभी मैं हेड्स को समझा रहा हूँ कि हेड्स क्या होते हैं। तो हेड्स ये है कि ये परचेस अकाउंट के अंदर में आप परचेस करते हैं, वॉट एवर यू आर परचेसिंग दैट गो टू द परचेस अकाउंट। मे बी मटेरियल, मे बी सर्विसेज और मे बी फिक्स एसेट। दिस कम्स इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स। नेक्स्ट इज सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट्स क्या होता है दोस्तों? सेल्स अकाउंट पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में खड़ा होता है। वॉट एवर यू सेल इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गुड्स, इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल सेल्स, दैट्स कम अंडर द सेल्स। सेल्स में कैश सेल भी होते हैं और क्रेडिट सेल भी होते हैं। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। कैश सेल में क्या होता है, आपको इमीडिएटली मटेरियल जाता है और कैश मिल जाता है। इसकी एंट्री भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा होता है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल यानी यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी आप उधार पे माल बेच रहे हो। तो इस दिस केस में भी सेल एंट्री पास होती है। पहले सेल्स अकाउंट में कैश डेबिट टू सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, सिंगल एंट्री होगी, मगर क्रेडिट सेल में डबल एंट्री हो जाएगी। इन दिस सेल यू विल बी फर्स्ट book the sales, party account will be debited and goods will be credited. तो this is the sales entry। तीसरा अकाउंट है इम्पोर्टेंट, जो है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेड्स। इस हेड्स में आपको ये समझ में आता है, इस हेड में आपको क्या डालना है। इसके लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। ये फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले से अकाउंट फील्ड में है उनको पता है, मगर फ्रेशर्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग आइटम से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो इस डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। जैसे कि बहुत सारे हेड्स हैं, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, फ्यूल आ जाएंगे। और जो भी प्रोसेस, जो भी एक्सपेंसेस है, व्हाट ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, that's come in the direct expenses. And next is indirect expense. Indirect expense is again one important head of accounts. All the expenses which are related to overheads, that is called overheads. All the overhead expenses come under indirect expenses, related to your office expenses, administration expenses, staff salary, petty cash, all those comes in the indirect expenses. So this indirect expenses आपको अच्छी तरह समझ लेना है, खास करके स्टूडेंट जो कि अभी 11वीं 12वीं में है, कॉमर्स में है, उनको डीपली नहीं टीचर्स भी नहीं समझाते हैं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट सीए फॉर्म में जाते हैं, वहाँ पे भी इन हेड्स को अच्छी तरह डीप में नहीं समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये डीप में मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि उनको बेसिक क्लियर हो जाए कि क्या होता है।
कभी कभी हमारे फॉर्म में भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि उनका बेसिक नहीं क्लियर होता है, तो उन्हें हमें बैठ के समझाना पड़ता है, एक एक उंगली पकड़ के समझाना पड़ता है। इसलिए हमने ये वीडियो जारी किया है कि हमारे स्टाफ और जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी कॉर्पोरेट फील्ड में या सीए फॉर्म में काम करते हैं वो बेसिक चीज़ को समझ जाएं। जो फ्रेशर्स है, जो एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है, बट दिस क्लास इज ओनली बेसिकली फॉर बेसिक एंड हु वांट टू लर्न द अकाउंट्स। तो पहले बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स में जाने के पहले बेसिक, इफ़ योर बेसिक इज क्लियर देन यू कैन गो and post the entry. Third, I told you about indirect expenses. All overheads come in indirect expenses. And seventh is ledger. What is a ledger? In the ledger, all those entries. Ledger is very important topic and very important heads. Many people confuse about ledger. What is ledger and what is use of ledger? Ledger is very important. Suppose any party's balances you want to check. How you will check? You can only check by ledger, because all sales or receipt combinedly is called a ledger. So all the sales one side and receipt one side. So the balances, whatever the balance you want to see, you can see in the ledger only. You can take the printout and you can send to your party. Then only the party can understand what is the closing balance. Any figures, any statement closing balance you want, you can take the printout. Any party, sundry debtor, sundry creditor. Suppose you post the entry of sales, credit sales, and party give payment after 10 days. Then one side your sales will stand, another side your receipt will come. For example, you send 500 goods, receipt 400, so there will be 100 balances. There is 100 balance. So this is called a ledger. This way you can find out what is the difference. So you can send the statement to your party. Similarly, in case of purchase, you make the purchase on credit and you make the payment 500, 400, then 100 is payable again. So in this way, the ledger is very important topic, very important head of accounts. Without ledger, you cannot understand what is the actual balance pending in the accounts, any party account. So again, this is very important topic and heads of accounts. And 8 is suspense. Suspense is again one important heads of accounts. Suspense is created only for temporary purpose. Suppose if any materials come, any payments come, you don't know who has made the payment. Today, like everybody send the NEFT, sometimes party forget to write the name. So some suspense come in our mind, some confusion come in mind that who has sent this payment. So you can post it temporarily in the suspense account. Then when you post in the suspense account, it goes in suspense ledger. So in the future you can find out who has sent us payment. It is very easy to find out to which party is under suspense. Suppose you post in the ledger directly, then you will not be able to find out easily to who has make this payment. So if you put in the suspense, then you can find out easily, and you can search, you can call to those party and confirm from party who has gained this payment. The suspense is again very important ledger, and before finalization of account we must have to clear all those suspense, because we cannot keep the suspense at the end of year.
before finalization of account, you must have to clear the suspense. So it can be posed for temporary period. Suppose for 10 days, 15 days. Today you got a bank receipt, you don't know the party name, you can put in the suspense, and when you call to the confirm with the party, then you post the right accounts. So that is called the suspense accounts. So you can use the suspense account for temporary period of time. Another is ninth, assets. Asset is again one very important heads of accounts. It comes in the credit side of balance sheet. Asset contain two heads: current asset and fixed asset. What is current asset? And what is fixed asset? Current asset means the current value. Current asset include bank balances. Current asset include your cash balance and many others. Some current assets also include your stocks and others. So in case of, and fixed asset include your related with your fixed asset, means whatever the machinery you buy, whatever the patent right, whatever the fixed item you buy like mobile and laptops, that is goes to the fixed asset. In the future I will pass the entry and show you the entry of fixed asset, how to pass the fixed asset entry. At this moment you only understand the fixed asset. What is fixed asset? Fixed asset means fixed, which is going to be continuous for a longer period of time. Fixed asset is got depreciated. So the depreciation hit is also I will clear out. First you understand the assets. So whatever you buy, that is not going to finish within the year. That goes to the fixed asset, and yearly it will get depreciation. After 5 year, 4 year, 6 year, it will be reduced. The next is liability. Liability is another important heads of account. Liability contain many heads. It stands in the debit side of profit loss account. So whatever the liabilities are under in your hands, that's come under liability. It can be the sundry creditors, it can be loan, sundry creditors, can be loan, can be the current liability, so all these things come under the liabilities. The loans, current liability, tax liability, whatever is balance. Suppose you taken the 5 lakhs, suppose to be loan, and you paid the 4 lakhs within the years. 5 lakhs loan, paid rupees 4 lakh, and 1 lakh is balance. 1 lakh balance is comes in the loan liability at the end of year. That is called the loan liability. Similarly, the current liability can be included the tax, miscellaneous liabilities. There are many heads comes under this current liability. So you understand the basic meaning of liabilities. Another is purchase account, purchase return account. So whatever you purchase, that may goes into the purchase return accounts. If anything defective, that will come on the purchase return accounts. So it is also one of the important heads. Through this you can return the goods to the parties, because as whatever the reason maybe price high, maybe price is negotiable but not negotiated, maybe defective goods, defective services. So all this comes into the purchase return.
And what is next is sales return. What is sales returns? So whatever you sell in form of cash or credit goes to the party, and if party find out any deficiency in your product or services, they can call you and return the goods or services. That's come under the sales returns. So sales return is also one of the important heads of accounts. Through this you can understand, you can find out in the ledgers, sales return ledger, you can find out yearly whatever the goods has been returned, what is the reason of return, you can find and write the narration. Through narration you can understand the reason of returns. All these things comes under the sales return, and yearly you can find out the value also. Sales minus sales return, you can find out the net sales. So all these things comes under the sales return accounts. What is discount allowed? Discount allowed is a very important head. Students, there is two type of discount. One is allowed, one is received. Discount allowed content whatever discount you are giving to the party, that is comes under the discount allowed. Suppose you purchase discount allowed come under the sales. Suppose you sell anything out of 5,000 and party asking some discount, so you can give them 500, 100, whatever, 200 rupees to the discount. That is comes under the discount allowed. Discount allowed is again very important things. It reduces your sales. So whatever you give the discount, you can pass the entry in the discount allowed. Discount received is opposite of that discount allowed. Discount receive you in form of purchase. Suppose you purchase the goods of rupees 10,000 rupees, and party allow you discount of rupees 1,000, then you pay him only a 9,000 rupees. So 1,000 comes under the discount received. So understand the discount received and discount allowed. Both heads are very important in the accounts. Another is depreciation. Friends and students, understand the depreciation. Depreciation is another very important heads of accounts. Whatever the asset you buy in form of fixed asset that got yearly depreciated, that comes under the depreciation accounts. You have to pass the depreciation entry. Yearly basis. So before finalization of account, the depreciation entry must be passed. Depreciation entry I will teach you in the future. Depreciation entry is passed based on purchase, based on date of purchase. Depreciation is calculated based on purchase of assets. Suppose you purchase in the half yearly, then half yearly depreciation will be calculated. Suppose you purchase for the beginning of year, then it will be calculated for the full years. So these are the various formulas of depreciation. So I will teach you the depreciation in the coming topic. Another is bad debts. This bad debts is very important of heads of accounts. You need to understand clearly what is bad debt. Many people are confused about bad debts. So bad debt definition is that whatever the amount is not recoverable, that's come under the bad debt. There are many reasons of bad debts. Party may not be give payment for many reasons due to some defects or services. There may be long debt standing, but party is not paying payments. There are many reasons of bad debts. So bad debts cover all those amounts which are not recoverable, so that will go to the bad debts accounts. So this is a very
This all is a very important heads of accounts. Without understanding all these heads, nobody can pass the properly entry. So understanding this head is very important. So to hope that today topic you understand the heads of accounts, and in the coming session I will pass the entry of each heads. Then you can understand the exactly how to pass the entry and what is meaning and what is used and how to pass the entry and how to finalize the accounts. So in the coming lectures you will be understanding. Hope that you understand the meaning of these heads, because very rarely people teach you about these heads in the depth, because in the mostly टीचर्स जो होते हैं और जो सीए फॉर्म में जो बॉस होते हैं या आपके ऑफिस के सीनियर्स होते हैं, वो बहुत डीप में सिखाने में उनको बहुत टेंशन आती है। और ज़्यादा करके सीए फॉर्म में भी जो रखते हैं वो काम के लिए रखते हैं, उनको अपना काम निकालना होता है, या ऑफिस में भी उनको काम निकालना होता है। टीचर्स भी जो डीप में नहीं सिखाते हैं, क्योंकि उनको भी पढ़ा के फटाफट अपने घर पे जाना होता है, उनकी सैलरी फिक्स होती है, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, या तो वो ट्यूशन में पढ़ाना चाहते हैं जाके, वहाँ उनको अच्छी फीस भी मिल जाती है। तो इसके लिए आपको हमारा ये एम है कि स्टूडेंट को अच्छी तरह से ट्रेन करें ताकि फ्यूचर्स में उनको कोई दिक्कत ना हो। हमारे टीचिंग का यही एम है। सो स्टूडेंट, होप दैट you understand these lectures and will meet you in the next session. Thanks you.